channel. This is my very first video, so thank you so much for watching. Today I'm reviewing one of the most magical and loved franchise in the world, the Harry Potter movies. Instead of just giving one score, I will be breaking down the movies into different categories like story, acting, direction, cinematography and many more. Then at the end, I will give you my overall rating. So let's get started. सबसे पहले स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी इज इमेजिनेटिव एंड यूनिक। मैजिक है, मिस्ट्री है, एडवेंचर है। स्टोरी में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट है, लाइक हैरी, रॉन, हरमाइनी ग्रो करते हैं किड्स से यंग एडल्ट्स तक। और जो मूवीज़ में फ्रेंडशिप का थीम से ब्रेवरी का, सेक्रीफाइसेस का, वो काफ़ी पावरफुल है। और द ओवरऑल आर्क फ्रॉम ए बॉय डिस्कवरिंग हिज विजर्ड टू डिफीटिंग द ग्रेटेस्ट डार्क विजर्ड इज़ वेरी वेल कनेक्टेड एंड सेटिस्फाइंग। लेकिन some parts in the latter movies felt a little bit rushed and कुछ साइड प्लॉट्स जो कि बुक से थोड़े डिफरेंट कर दिए गए हैं। तो इसके चलते मैं इस मूवी को ऑन द स्टोरी बेसिस रेटिंग होगी मेरी तरफ से 9 out of 10। तो हमारी सेकंड पॉइंट है एक्टिंग। द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज द चाइल्ड एक्टर देमसेल्फ। जैसा कि डैनियल रेडक्लिफ हैरी का, इमा वाटसन हरमाइनी और रूपर्ट ग्रीन ने रॉन का कैरेक्टर प्ले किया, तो we can literally watch their acting improve with every movie. Supporting cast also raised the standard to another level. Alan Rickman as Snape, Ralph Fiennes as Voldemort, Maggie Smith as McGonagall, and many others gave legendary performance. Emotional moments, especially in the latter films, came across as deeply powerful and real. लेकिन कुछ कमियां थी इस मूवी में भी, like in the first couple of films, the child actors were a bit stiff and inexperienced, which made their performance less natural in the earlier movies. और कुछ साइड कैरेक्टर्स को enough स्क्रीन टाइम नहीं मिला जो कि मिलनी चाहिए थी। So overall, in terms of acting and performance, this movie deserves a solid 8.5 out of 10. Third point है direction. Each director brought their own unique style. क्रिस कोलंबस, उन्होंने बच्चे वाली मासूम जादुई दुनिया को बखूबी दिखाया। अल्फांसो क्यूरॉन, जो कि प्रिजनर ऑफ अज़काबान के थे, he gave the series a darker and more mature tone. Mike Neville, Goblet of Fire के, he balanced school life with big scale action perfectly. और फिर बाकी के 4 फिल्में डेविड येट्स ने की। उन्होंने फिल्म में इंटेंसिटी बढ़ाई और एक शानदार सिनेमैटिक फिनाले दिया है। The transition from light and fun to dark and serious were handled smoothly. The magical world felt alive and believable thanks to the strong direction given by the different directors. बट अलग अलग डायरेक्टर्स के कारण कभी कभी जो मूवी का टोन है वो थोड़ा अनइवन फील होगा। कुछ प्लॉट्स जो है वो जल्दी में निपटाए गए, कुछ आसान बना दिया गया, खास करके बाद की फिल्मों में। सम फैन फील्स डेविड येट्स डार्कर स्टाइल while good lacked the warmth of earlier movies. So overall, according to me, I will give 8 out of 10 in direction. अगली कैटेगरी है सिनेमाटोग्राफी। The film captured the magical atmosphere beautifully, from the grandeur of Hogwarts to the dark, chilling feel of Voldemort's world. Prisoner of Azkaban stands out for its artistic camera work, moody colors and sweeping shots. इस पार्ट्स ने सीरीज को एक मैच्योर विजुअल स्टाइल दिया है। The latter films, especially Deathly Hallows Part 1 and 2, used darker tones, dramatic lighting and stunning battle sequences that made the stakes feel real. The balance of fantasy visual and realism make the world believable. हालांकि the first 2 films, while magical, look a little bit bright and safe compared to the darkened tone of the latter movies. और some CGI effects, especially in the earlier movies, look a bit outdated now. हाँ, अब पहले की मूवी है तो उस अकॉर्डिंग तो उन्होंने अच्छा किया, बट अगर आज के कंपेयर में करते हो तो थोड़ा सा आउटडेटेड तो है। सो इन सिनेमाटोग्राफी आई विल गिव 9 out of 10। अगली कैटेगरी है विजुअल इफेक्ट्स। अगर अपने टाइम के हिसाब से देखा जाए इस मूवी को, तो इस मूवी ने काफ़ी बेहतरीन ग्राउंड ब्रेकिंग मैजिकल विजुअल दिए हैं, लाइक फ्लाइंग ब्रूम स्टिक्स, क्विडिच मैचेस टू पेट्रोनस चार्म्स एंड डुएल्स। और कुछ क्रीचर्स लाइक डॉबी, बगबी, थ्रेस्टल्स एंड ड्रैगन्स वेर ब्रॉट टू लाइफ रियलिस्टिकली एंड इमोशनली। डेथली हैलोज पार्ट 2 की फाइनल बैटल की विजुअल्स भी काफ़ी शानदार थी, विथ स्पेल्स, एक्सप्लोजन्स एंड लार्ज स्केल मैजिकल वॉरफेयर। द इफेक्ट्स होल्ड अप वेल इवन टुडे कंपेयर टू मेनी अदर फैंटेसी फिल्म्स ऑफ दैट एरा। हाँ, कुछ सम अर्ली CGI इफेक्ट्स आउटडेटेड हैं,
like the troll in Sorcerer's Stone, and few scenes rely too heavy on effects, which sometimes overshadow the emotional tone. तो अगर visual effects पे rating की बात की जाए तो मेरी तरफ से 9 out of 10 है. Next category is music and sound design. In the first three films, John Williams' score gave us the iconic Hedwig's theme, one of the most recognizable movie themes ever. The music perfectly matches the tone shifts, playful and magical in the early movies, darker and more emotional in the later ones. The sound design makes the world believable. One-to-one Quidditch matches, the roar of dragons, and the eerie whispers of Dementors and all feel immersive. Emotional moments like Dumbledore's death or the final battle are lifted higher by the powerful soundtrack. जॉन विलियम्स के जाने के बाद म्यूज़िक अच्छा तो था, बट डिड नॉट ऑलवेज कैरी द सेम मैजिकल चार्म और मेमोरेबिलिटी. कुछ फैंस को लगता है कि किताबों में कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स और मजबूत म्यूजिकल थीम्स मिलनी चाहिए थी. सो म्यूज़िक एंड साउंड्स में देखा जाए तो 9.5 है मेरी तरफ से. द नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉस्ट्यूम्स एंड मेकअप. हॉगवर्ट्स की यूनिफॉर्म और रोब्स ने एक टाइमलेस क्लासिक विजार्डिंग स्कूल लुक दिया है. सभी हाउस की अपनी अलग डिजाइन डिटेल्स थी, मेकिंग देम डिस्टिंक्ट. आइकॉनिक कॉस्ट्यूम्स लाइक स्नेप्स ब्लैक रोब्स, डम्बलडोर्स मैजेस्टिक आउटफिट्स, वोल्डेमॉर्ट्स eerie cloak and Bellatrix gothic style perfectly match their personalities. अगर मेकअप की बात करें तो कैरेक्टर्स लाइक वोल्डेमॉर्ट, वेयरवुल्व्स, गॉब्लिन्स एंड डेथ हीटर वर हाईली डिटेल्ड एंड बिलीवेबल. जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, कॉस्ट्यूम मैच्योर्ड विद द कैरेक्टर्स, showing their growth from school kids to warrior in the final battles. A few characters, especially in the early films, had very simple or plain costumes, and makeup effects like troll or early goblins look slightly dated now. तो कुल मिलाकर costumes and makeup के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 9 out of 10. Next point is genre execution. As a fantasy adventure series, it nails the balance between magic, mystery and emotional drama. इसमें कई genres को perfectly मिलाया गया है, like school life, coming of age, friendship, action, mystery, and even elements of horror like Dementors and graveyard scenes. The gradual shift from a light-hearted children's fantasy to a dark, intense war story is seamless and believable, showing strong execution. It successfully brings book fantasy into mainstream cinema in a way that both kids and adults could enjoy. So, मेरे according genre execution में 10 out of 10 है. Next, we talk about rewatchability. The magical world of Hogwarts never gets old. Viewers can watch it again and again and still feel the charm. हर बार दोबारा देखने पर आपको छोटी छोटी डिटेल्स लाइक छिपे हुए क्लूज, भविष्य के संकेत, जादुई वस्तुएं नजर आती हैं जो पहले शायद छूट गई हों. द मूवीज कवर ए वाइड इमोशनल रेंज, funny, adventurous, scary and heartwarming, making them enjoyable no matter your mood. They are strongly tied to nostalgia, especially for fans who grew up with the series, which makes rewatching very comforting. So, on rewatchability, I will give 10 out of 10. And the last point is ending. Deathly Hallows Part 2 delivers an epic climax with the Battle of Hogwarts, full of action, sacrifices, and emotional closure. Harry's final confrontation with Voldemort was satisfying, especially with the reveal about the Elder Wand and Harry's bravery in facing death. The deaths of beloved characters like Snape, Fred, Lupin, and Tonks add emotional weight, showing the true cost of a war. And also the 19-year later epilogue gives fans a sense of closure and a hopeful future for the main trio. बट फिर भी कुछ फैंस को लगा कि हैरी पॉटर और वोल्डेमॉर्ट का आखिरी ड्यूल किताबों में ज़्यादा बेहतर था. इट वॉज मोर इंटीमेट एंड लॉजिकल देयर. एपिलॉग नॉस्टैल्जिक होने के बावजूद थोड़ा जल्दीबाजी वाला लगा और सभी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया, और कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर्स का भी भविष्य फिल्मों में उतनी गहराई से नहीं दिखाया गया है. सो अकॉर्डिंग टू मी, फॉर एंडिंग ऑफ द मूवीज आई विल गिव 8.5 आउट ऑफ 10. तो सभी 10 कैटेगरी को डिस्कस कर लिया गया है, and when we put it all together, the Harry Potter movies score a overall rating of 9.1 out of 10, and that's my breakdown review. Since this is my first video, I would love to hear from you. How would you rate the Harry Potter movies? Let me know in the comments. Thanks for watching, and I will see you in the next video.